fall, the world transforms into a canvas of warm colors. The air feels cool, and after the rain, the earth smells fresh. It's a time when nature comes alive in new ways. Especially the field of India where Kush flowers bloom like white clouds against the blue sky. And during this season, the beautiful red munias emerge lively and curious as they search for food and prepare their nests. And with their bright colors, they add a splash of joy to the golden landscape. At the 200 mm range, I can capture stunning wide-angle shots that beautifully showcase the bird within its natural habitat. On the other hand, zooming into 600 mm allows me to focus the intricate details, revealing the delicate patterns and vibrant colors of the bird's feather in breathtaking close-ups. This range gives me the perfect balance between capturing the environment and the fine details of the birds. कोई सब्जेक्ट को किसी भी फोकल लेंथ में फ्रेम करते हो एंड देन उसको जूम इन या जूम आउट करते हो तो हैंड शेक होने के वजह से आपके जो फ्रेम है या जो कंपोजिशन है वो चेंज होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहता है. Using manual focus is crucial when capturing images of a bird that's behind a large obstacle. In case of Sony 200 to 600 mm lens, the manual focus ring is also very impresses me about the Sony Alpha system is its outstanding autofocus performance, which is most essential for bird and wildlife photography. In this field, missing the perfect moment can mean you lose your shot forever. The autofocus performance of the Sony FE 200 to 600 mm lens paired with the Sony A1 is outstanding. The focus speed is not only lightning fast but also operates silently and with remarkable precision. Thanks to Sony, most of them are failed जब हम फोकस को इन्फिनिटी से लेंस का मिनिमम फोकस डिस्टेंस में कोई सब्जेक्ट को फोकस करने जाते हैं. इन सिचुएशन में या तो लेंस हर्न करता है या फिर फोकस नहीं कर पाता है. पर इन केस ऑफ Sony FE 200 to 600 mm lens paired with Sony Alpha 1, I have seen a remarkable result in this situation. This is the most challenging situation for a camera or lens to switch the focus. जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है एंड जो सब्जेक्ट है वो डार्क कंडीशन में है. पर इन सिचुएशन में भी Sony FE 200 to 600 mm लेंस का जो ऑटो फोकस परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अमेजिंग है. आजकल के मोस्ट ऑफ द मॉडर्न मिररलेस कैमरास में आपको बर्ड आई एफ देखने को मिल जाता है, पर मोस्ट ऑफ देम आर फेल्ड इन केस ऑफ स्मॉल बर्ड एंड इन केस ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट. The bird eye f performance on the Sony A1 is outstanding and a true game changer for bird and wildlife photography. As you know, munia, especially the red munia, is tiny bird of grassland. एंड मैंने इससे पहले जो सारे मिररलेस कैमरास को यूज़ किया हो, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर फेल्ड टू डिटेक्ट द आइज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनियास.
एंड ऐसे सिचुएशन में भी सोनी अल्फा 1 एंड सोनी FE 200-600 लेंस मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया। इवन बहुत ही दूर में बैठा स्मॉल मुनियस के आइस को भी ये पेयर बहुत ही आसानी से डिटेक्ट कर लेता है एंड उसको ट्रैक भी कर लेता है। इन केस ऑफ लार्ज बर्ड्स इट्स easier for the camera to detect their eyes and track them effectively. However, in case of small birds, it can be quite challenging for the camera sensor to find and track their eyes. And in this regards, the Sony A1 impressed me greatly. The Sony FE 200-600 lens paired with the Sony Alpha 1 offers outstanding image stabilization that makes handheld shooting at long focal lengths feel effortless. Even at 600 I was able to capture sharp blur-free images at slower shutter speeds. Thanks to the combination of lens optical steady shots, the ऑप्शन का 3 मोड्स देखने को मिलता है। जो मोड 1 है वो आप जनरल पर्पस ऑफ फोटोग्राफी में या स्टेडी सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो मोड 2 है वो पैनिंग ऑपरेशन के लिए, या अगर आप आपके सब्जेक्ट को पैन करके शूट कर रहे हैं तो आप मोड 2 में रख के शूट कर सकते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट का मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल, इरेगुलर या जिगजैग मूवमेंट है तो आप मोड 3 को यूज करके शूट कर सकते हैं। While this review focuses primarily on stills, it's worth mentioning the remarkable video capabilities of this pairing as well. The combined stabilization ensured that handheld video footage is smooth and stable even at the long end of the zoom range. And this makes the Sony FE 200-600 an excellent choice for videographers. The Sony FE 200-600 lens delivers stunning image quality that exceeds expectation for a super telephoto zoom lens. Whether you are shooting wildlife, birds, sports or distant landscape, this lens impresses with its sharpness, contrast and accurate color reproduction across the entire zoom range. All over focal length में the images are incredibly sharp and contrasty at maximum aperture. Especially the center sharpness are fantastic. Even at the long edge, the corner sharpness is notably good, which is a key strength for a photographers looking for capture fine details at extreme focal lengths. लेंस में आपको 17 ग्रुप्स में 200-600 लेंस ऑल ओवर फोकल लेंथ के इमेजेस में मुझे स्लाइटली लैटरल क्रोमेटिक एब्रेशन देखने को मिला, बट दे आर इजीली करेक्टेबल इन पोस्ट प्रोसेसिंग। लेंस में आपको एक्शन में शूट करने के टाइम भी मुझे फ्लेयर या रिफ्लेक्शन के वजह से इमेज में कॉन्ट्रास्ट इशू स्लाइटली देखने को मिला, बट अगेन आप उसको बहुत इजीली करेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग पोस्ट प्रोडक्शन। लेंस के फोकल लेंथ के शॉर्ट एंड के इमेजेस में आपको स्लाइटली बैरल डिस्टोर्शन एंड लेंस के फोकल लेंथ के लॉन्ग एंड के इमेजेस में आपको स्लाइटली पिनक्यूशन डिस्टोर्शन देखने को मिल सकता है, जो कि इन सारे बजट लॉन्ग टेलीफोटो जूम लेंस में बहुत ही कॉमन है, पर आप इसको रियल लाइफ रिजल्ट में जनरली नोटिस नहीं कर पाएंगे एंड अगेन आप इसको बहुत ही आसानी से करेक्ट भी कर सकते हैं। सो ओवरऑल द इमेजेस आर शार्प एंड मैंने इससे पहले बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स के 600 रेंज के बहुत सारे टेलीफोटो जूम लेंस को यूज़ किया हूँ एंड द सोनी FE 200-600 इज़ द शार्पेस्ट एट 600 एंड मैक्सिमम 6.3 aperture among them. बट अगेन ये एक बजट टेलीफोटो जूम लेंस है, तो आप इसके इमेज क्वालिटी को या शार्पनेस को आप सोनी के जी मास्टर कोई टेलीफोटो प्राइम या जूम लेंस से कंपेयर